Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you're following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. Not getting the best law school or the law school that you wanted to get admission in. चाहे वो 5 year law course के लिए था, चाहे वो 3 year law course के लिए था. If you're not getting the law school that you wanted, that was your dream law school, what are the things that you can do? I'm going to discuss that in this video today, right? I'm going to refer a lot of videos. तो क्या हुआ था basically, I sat down to record this video the moment CLAT happened, the moment Delhi University के results were out, and I thought that I should sit down with you guys and have a chat that what you should do if you are not getting admission in the best law school, right? But then I thought that I need to have some material which I can refer to. So that's why if you have not checked the previous videos, I'll be referring to them. Do check them. They are for your benefit. I've researched a lot to do those videos. So this video might be a longer video because you're going to go for 5 year law course. Then everyone says if not NLU, then which one is the best law school? Which one should I go for? Now, there is no one answer for everyone. There's no straight jacket answer for everyone. Everyone won't be able to fit in that one answer. तो हर किसी को different चीज suitable रहेगा. Maybe this A law school is good for one person but is not good for the other person, right? Why? What are the things that you should consider? We're going to talk about everything. Number one, please grab your pen and a notebook which stays with you, because I'm going to discuss it and you need to think over it. Look, in the end, you need to decide. Okay, question number one, you need to ask yourself what you want to do after law. What you want to do after law. Now, number one, I know most of you want to go for either judiciary or you want to appear for any government exam. It could be judiciary, UPSC or any other. Right now, if you want to go for a government exam, अगर आप किसी government exam के लिए जाना चाहते हैं, तो basically eligibility criteria क्या है? That you need a degree. आपको एक degree चाहिए, right? Nothing else. Degree plus knowledge of law. Now you will say, okay, now there are a lot many people who ask me, is this particular ABC college good for judiciary? Bacha, every college, be it NLU, be it not an NLU, be it Delhi University, be it Punjab University, GLC Bombay, Symbiosis, every law college is good for judiciary. Why? Because you need a degree, and thereafter it is how you prepare for judiciary that is going to matter. They are not going to see that this person is from Delhi University and this person is not from Delhi University, or this person has done law from NLU and this person has done law from some private institute. No, in judiciary you clear your exam, you appear for the interview. If you are good enough, if you fulfill the criteria, you are in. Right? There's nothing like this that this college is good for judiciary or is not good for judiciary. Every college is good for judiciary. Every college. You just need a degree. Right? समझ रहे हो ये वाली बात? तो ये वाला question answer हो गया कि is this particular college good for judiciary? Every college is good. Every law school is good for judiciary because you will get a degree. That is the eligibility criteria. Yes, if the faculty is good, then it would be helpful. But faculty is very dicey. Today the professor is in this university, tomorrow he or she might change the university or might go somewhere else, right? So faculty is a very dicey concept. You cannot rely on that, right? Ultimately you yourself have to study. हर कॉलेज में there would be professors जो एक दो सब्जेक्ट्स में अच्छे होंगे, दो तीन सब्जेक्ट्स के ठीक ठाक होंगे, राइट? सो एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी कॉलेज हैज़ दिस, राइट? अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नॉट अ वेरी बैड कॉलेज जिसके अंदर सारा ही फैकल्टी खराब है. बट नॉर्मली कॉलेजेस में इफ़ यू आर बीइंग टॉट 6 subjects or 5 subjects in a semester, 3 or 2 professors would be really good with their subject, 2-3 would be medium or not that good, right? So now coming to litigation, practicing in the court of law. Now if you want to practice in the court of law, if you really want to practice, now for this also every college is good. But when it comes to litigation, you need to at your end also do a lot many things. For example, you need to have a better understanding of laws. Like you cannot be that person, you know, normally those who have to go for litigation, what is told to them is, oh, you don't need this theoretical knowledge. I mean, what you need is your practical knowledge. Law schools में तो कुछ भी practical नहीं होता है, तुम क्या करोगे? मस्ती मारो, have fun, you don't really need to do anything, which is completely wrong. Because you need
to have the basic understanding. Would the CPC Bear Act change or would the laws change? In the law school, what you are being taught, no doubt, is theory, but ultimately that theory part is going to be applied practically. दैट इज राइट राइट, थ्योरी पार्ट ही आप प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे। तो अगर आप लॉ स्कूल के अंदर अपना थ्योरी पार्ट अच्छे से कर लेते हो तो क्या जब प्रैक्टिस करने जाओगे इजी नहीं रहेगा, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी आता है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स पास कर लेते हैं लॉ के और उन्हें बेसिक्स नहीं पता होता, उन्हें नहीं पता होता कुछ भी, वो बिल्कुल जीरो होकर जाते हैं प्रैक्टिस करने। तो क्या होता है, जो पहले 2 इयर्स हैं उसके अंदर तो वो थ्योरी को पे ही फोकस करते रह जाते हैं। थ्योरी भी सीखना पड़ता है, प्रैक्टिकल भी सीखना पड़ता है, तभी उनके स्ट्रगलिंग ईयर्स ज़्यादा होते हैं। बट अगर आप अपने लॉ स्कूल में अंडरस्टैंड करोगे, लॉज को रट्टा नहीं मारना है, अंडरस्टैंड करोगे, देन योर लाइफ वुड बी ईजी। अगेन, कौन सा लॉ स्कूल लिटिगेशन के लिए अच्छा है? देखिए, अगर आप अच्छे से अच्छे लॉ स्कूल में जाएंगे उतना ही बढ़िया, बट अगर आपको अच्छे से अच्छा लॉ स्कूल नहीं मिल रहा है, देखिए जो चॉइसेस है, अगर आपके पास 1 2 3 चॉइसेस हैं उसमें से बेस्ट चूज करिए, ठीक है। बट कोई भी लॉ स्कूल में चले जाइए, अगर जो मैं चीज़ें आपको बताती रहती हूँ कि ये करिए ये करिए, वीडियो कर रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए एज अ लॉ स्टूडेंट, व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स एज फॉर लॉ स्टूडेंट्स दैट यू शुड डू so that you have a better CV and that is going to work for everyone, be it a person who wants to go for judiciary exams, litigation, everyone। तो यहाँ पे भी अगर आपका कॉलेज ज़्यादा अच्छा नहीं है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगेन यू हैव टू चूज द बेस्ट, राइट। अब ये नहीं कह सकते लिटिगेशन के लिए एक पर्टिकुलर कॉलेज अच्छा है, क्योंकि लिटिगेशन के अंदर अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉज, यू हैव टू गो फॉर इंटर्नशिप्स, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू स्टे अपडेटेड, राइट, यू वर्क ऑन योर लीगल स्किल्स, राइट। वो कैसे करना है, कैसा होना है, वो सारा मैं आपको इंटर्नशिप वाली जो प्लेलिस्ट है मेरी, अगर आप यू विल वॉच दैट, यू विल गेट टू नो, राइट। यू वांट टू गो फॉर फर्दर स्टडीज, यू से आई वांट टू डू LLM, ठीक है। मैं अभी जो है आई हैव प्लान दैट आई विल डू law from any college, any university. After that, I am going to aim for go for LLM from a very good university or college, right? Now this is also then also कोई भी college है, it won't matter. Next is corporate law, law firms. Now you want to work with law firms, you want to work with companies. जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने corporates में काम करना है, they need to check that उनके law schools में जो है placements हैं या नहीं। Don't assume that every law school will have placements. Don't assume. You know what, I made 2 videos, one on 3-year law schools and the other one on 5-year law schools. When I researched about all the law schools, I found that they are not telling us about their placements clearly. क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि हम पूछ नहीं रहे। So we need to start asking that where your students are getting placed. Because why should we ask? Because we are paying fees and we know law schools जो हैं वो सस्ते नहीं हैं, they are very expensive. Law schools are expensive, especially be it 5-year law schools and 3-year law schools also, they are expensive, so we need to ask, right। अब एक और चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, अगर आपने लिटिगेशन और जुडिशरी में जाना है तो आप ये भी देखो कि आप ज़्यादा महंगे लॉ स्कूल में मत जाओ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा महंगे लॉ स्कूल में जाने का, ठीक है ना। अनलेस एंड अनटिल वो टॉप लॉ स्कूल नहीं है, समझ रहे हो। अगर टॉप लॉ स्कूल के अंदर आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो तो ठीक है, आपको मिल भी रहा है, बट एक ओके लॉ स्कूल के अंदर आप ज़्यादा फीस दे रहे हो और आपने करना क्या है, लिटिगेशन और जुडिशरी में जाना है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग इट, मैं वर्थ इट है या नहीं यही बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट इज, अगर आप कॉर्पोरेट लॉ के लिए जाना चाहते हो, फिर प्लेसमेंट्स है बट फीस ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो कि जाना चाहिए या नहीं, वो भी रिसर्च करो, पढ़ो उनके बारे में। वाई डोंट यू रिसर्च, वाई डू यू जस्ट क्लोज योर आइज कि ठीक है मैंने इस लॉ स्कूल का नाम सुना है अच्छा ही होगा? नहीं, यू नीड टू रिसर्च, यू नीड टू नो एवरीथिंग। अब अगर आप उस कैटेगरी में हो दैट यू डोंट नो व्हाट यू रियली वांट टू डू, विच इज़ फाइन, अगर आपको नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हो आफ्टर लॉ, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, ये कोई बुरी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो फिर आप ऐसे लॉ स्कूल में जाइए जहाँ पे सारी ऑप्शंस खुली हैं। मतलब कल को अगर आपको लिटिगेशन में जाना आप जा सकते हो, जुडिशरी देना है वो दे सकते हो, लॉ फर्म के साथ काम करना है तो वहाँ प्लेसमेंट्स होनी चाहिए, तो सब कुछ हो वहाँ पे।
right? So bacha, you have to see a lot many things when you choose a law school. We are going to discuss it in this very video, so keep on watching. अगर आपको अपनी पसंद का लॉ स्कूल नहीं मिल रहा है, then what are the options? सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 5 year लॉ कोर्स वाले हैं, ठीक है? You can go for any other law school, right? I have prepared a list of law schools that you can go for. The video name is other than NLU, law colleges other than NLU, ठीक है ना? उसके अंदर I have talked about the colleges. I have tried to review the college on the basis of their fees, how they're admitting the students, how are the placements, everything. आप वो video देखिए and you try to select a college. And अगर मैंने कोई college या university miss कर दिया तो please उसी video के comment section में write down the name of the college. I'll create a part 2 of that very video wherein I'll discuss and I'll review more colleges and universities, right? So you choose from that. But आपने क्या दिमाग में रखना है कि what you want to do, right? I have talked about it in detail and that is what you need to keep in mind. Any other, you can also go for any other course like that of BA, BCom, BBA, right? Why? Because ultimately law is the only course wherein you get a very clear cut second chance, which is that second chance that you can go for 3 year law, that you can go for 3 year law. If you go for BA, BCom, like if you're going for BA, you've decided that okay, I'll go for BA, I'm not getting any good 5 year law college or university, then I have discussed the subjects that you should go for and how you should keep on preparing while you are doing your BA for 3 year law entrance exams, right? You can also go for 3 year law courses. Now if you want to know about 3 year law colleges, I've done again a very much detailed video talking about all the colleges that you can consider. I've talked about their placements, fees, how do they give you admission, what is the eligibility criteria. प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़, आई हैव डन देम फॉर यू. मैं ये वीडियो डायरेक्टली भी कर सकती थी कि मैं डायरेक्टली बोल दूँ कि आप 3 year लॉ के लिए जा सकते हो, बट चॉइसेस बतानी थी, ऑप्शंस बतानी थी मुझे. तब भी फॉर 1 whole week आई वॉज वर्किंग ऑन दोज वीडियोज़ so that I can put before you that bachas, these are the options that you have. 5 year law course candidates also have another option, that is to take a drop year. ठीक है ना, कि आप एक drop year ले लो. But again, please watch the video that I have done which talks about कि what are the things that you should consider when you think that you want to take a drop. Next, if you want to take a drop, there are things that you need to plan, there are things that you need to decide on, which is a very important video. एंड इवन अगर आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, वेरी गुड, ठीक है, आपका डिसीजन है, बट प्लीज वॉच द वीडियो विच टॉक्स अबाउट हाउ टू प्लान एज अ ड्रॉपर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एज अ ड्रॉपर. वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इफ यू आर अ 3 year law course candidate who is taking a drop or 5 year law course candidate taking a drop, please watch that video. Okay, next is if you are the candidate जिसको 3 year law course करना है, आपको 3 year law course के लिए जाना है और आपको अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए जा सकते हो. अगेन 3 year लॉ वाली वीडियो में मैंने बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट डिस्कस करे हैं, बात करी है. बट आपने क्या ध्यान में रखना है कि आप क्या करना चाहते हो आफ्टर लॉ. नहीं पता तो सारी ऑप्शंस खुली रखोगे, ठीक है. अगर आप जुडिशरी या लिटिगेशन के लिए जाना चाहते हो, देन यू कैन इवन प्रेफर टू डू लॉ फ्रॉम एनी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी. If you are preferring to do your law from any state or central university, then it is very important that you watch the video wherein I am talking that what a law student should do while doing law so that the person gets settled, उसको job मिल जाए, उसकी settle हो जाए वो बच्चा. Please watch that video. I can 100% guarantee you that if you watch that video and if you make your to-do list and you do what I am telling you to do, you will have a good CV and you will be a successful advocate lawyer, right? Third option that you have is that you take a drop. Now if you're planning to take a drop, please watch the video that I have done so that you consider, you hear that video, you consider the questions that I have talked about, and then you say yes or no that I'll be taking a drop or not. When choosing a law school, what should you consider? Now when choosing a law school, all these things are that you need to consider, but I'm going to discuss one by one each one of it. Let's go. Number one, fee structure. Now I again and again say
it is very important to consider the fee structure. You should see कि yearly कितना खर्चा होगा आपका yearly, and complete law approximately कितने में होगी. Guys, this is very important because you might have to study further. You might have other options to go for after your LLB, but you are not able to pursue those options because आपने already बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया LLB में. तो आपने देख कर स्पेंड करना है. You should see your family financial situation and then check out the fee structure of the college or the university you're going for and then step into it. Especially अगर आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जिसका इतना नाम नहीं है, जो इतनी फेमस नहीं है, जिसके रिव्यूज अच्छे नहीं है, डाइसी रिव्यूज हैं, please check out the fee structure. Very important. Right, next is placements. Now I have time and again talked about that. Please check out the placements on the website. मैंने भी बात करी है placements की. चेक आउट करो कि क्या कौन सी कंपनीज है जिनके साथ placements हो रही हैं. बहुत सारे कॉलेजेस आपको MBA या इंजीनियरिंग की placements दिखा देते हैं लॉ की जगह. प्लीज रीड. जब वो पिक्चर लगाते हैं स्टूडेंट की एंड देन नीचे लिखते हैं इंजीनियरिंग, आप पढ़ते ही नहीं हो, आप तो देख लेते हो दैट द स्टूडेंट हैज गॉट प्लेस्ड विद Amazon, has got placed with Google. You have to check out, are there placements in law? No. Yes, you should know that, right? And one more thing that I've noticed recently is that various law schools, what they do is they put placements and internships. Look, there is a difference between placements and internships. Placement मतलब job मिल गया, ठीक है. इंटर्नशिप मतलब 1-2 महीने के लिए काम करने को मिला उस कंपनी में, या मे बी 5 months के लिए. वो पेड भी हो सकता है, मे बी नो सैलरी, मे बी दे गिव यू स्टाइफन, मे बी दे डोंट गिव यू स्टाइफन. व्हाट मैटर्स इज placement, not internships. They don't matter much. What matters is placements. Internships आप खुद भी apply कर सकते हो, placement भी खुद apply कर सकते हो, but अगर on campus placement है और अगर वो आपसे इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हैं तो why don't you go for a college जहाँ on campus placements हैं, right? Faculty, I've told you again and again, faculty is a dicey thing. Faculty एक dicey चीज़ है. जब आप कॉलेज में आ जाते हो, यूनिवर्सिटी में आ जाते हो, आप रिलाई करते हो अपनी सेल्फ स्टडी पे, आप एग्जाम्स के आसपास ही पढ़ते हो और खुद ही आपको पढ़ना पड़ता है. यस, अगर फैकल्टी अच्छी है तो बहुत बेनिफिशियल है, बट फैकल्टी मोस्टली कॉलेजेस में चेंज होती रहती है और हमें कुछ नहीं पता चलता फैकल्टी के बारे में. लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा. मान लीजिए आप दिल्ली के अंदर हो, मान लीजिए आप बॉम्बे के अंदर हो, मान लीजिए आप बैंगलोर के अंदर हो, मान लीजिए आप पुणे के अंदर हो, जहाँ कंपनीज हैं. जब आपको इंटर्नशिप्स करनी है, जहाँ पे हाई कोर्ट्स हैं, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली के अंदर, अगर आपको इंटर्नशिप करनी है तो आपको कितनी सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे. अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस है इंटर्नशिप के लिए, नंबर 1. नंबर 2, आपको रहने की प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आपका कॉलेज वहाँ पर है, अगर आपका हॉस्टल वहाँ पर ही है, तो आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा पीजी के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए. ये सब चीज़ें भी सोचनी पड़ेंगी, राइट? आपको ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल. अगर आपको जुडिशरी की तैयारी करनी है, आपको इजीली क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है. अगर आपको कुछ और स्टार्ट करना है तो ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल होंगी बड़े सिटीज़ में, राइट? तो ये भी कंसिडर करना है. नंबर ऑफ सीट्स, अब कई कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स ही मेंशन नहीं है, विच इज़ नॉट राइट. यू शुड सी कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, वो किस बेसिस पे आपको एडमिशन दे रहे हैं. कोई टेस्ट ले रहे हैं, पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हैं, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे दे रहे हैं, कोई 12th का क्राइटेरिया है, क्या है? बिकॉज काइंड ऑफ क्राउड मैटर्स. इट इज सेड अगेन एंड अगेन कि आप जैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हो वैसे आप बन जाते हो, और यहाँ पे तो आप ग्रेजुएशन करने वाले हो, तो इसलिए इट मैटर्स कि क्राउड कैसा है. और वो कैसे पता चलेगा? एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन का बेसिस क्या है, राइट? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो कितने इन्वॉल्व हैं, ये भी पता ज़रूरी होना चाहिए आपको, ठीक है. अब बात करते हैं रैंकिंग एंड एसोसिएशन विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज. दिस इज वेन एवर यू सी दिस यू आर लाइक, ओ वाओ, दिस यूनिवर्सिटी हैज़ एसोसिएशन विद दिस फॉरेन यूनिवर्सिटी, इसकी रैंकिंग ये है. What matters to us is all the above things, राइट? प्लेसमेंट है या नहीं, फैकल्टी कैसी है, लोकेशन कैसी है, क्राउड कैसा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है या नहीं. रैंकिंग नहीं मैटर करती इतनी. लेट्स बी ऑनेस्ट, यू सी कॉलेजेस
in the rankings, we should not be there in that ranking, and sometimes they are having good ranking because जो ranking का basis होता है वो infrastructure होता है, कुछ facilities होती हैं। तो आपको रैंकिंग के पीछे नहीं जाना, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लेसमेंट के पीछे जा सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर, फैकल्टी, लोकेशन, इस सब के पीछे चले जाओ, बट प्लीज़ रैंकिंग को साइड बाय कर दो बिकॉज रैंकिंग का बेसिस कंप्लीटली डिफरेंट होता है, राइट? यू शुड कीप दिस इन माइंड, ओके? तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।